Okay, students, now past paper questions from the topic of functions. The question number 1 from past paper 5 is from May, June 17, paper 1-1. How to solve this question? Check karte hain janab. In the question number 1, a function is given. Find an expression of f inverse. How to calculate f inverse? आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है. आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है how to calculate f inverse. First, equate function with y. Y equals to 2 over 3 minus 2x. And then make x be the subject. So cross multiplication 3 minus 2x equals to 2 upon y. And 2x equals to 3 minus 2 upon y. And x equals to 3 divided by 2. And 2 divided by 2y will be 1 upon y. जैसे ही x subject बना, हम कह सकते हैं this is the inverse function of x. 3 over 2 minus 1 over replace y by x. Right? So this is your inverse function. Are you clear? Now, after that, light. Yes. Yes, please. Now, after that, in the second part, the function is defined, g function is defined by, the g function gx is defined by 4x. बेटा जब 2 नीचे आएगा तो 2 and 2 cancel out, so 1 over y. Now, gx equals to 4x plus a. Find the value of a for which gf minus 1 equals to 3. First, I'm calculating the function gf, right? Means replace x of g. Replace x of g by f. Yes, beta. Replace x of g by f. So here is the g function. Replace x by f plus a. So can I say that it will be 4? What is function f? 2 over 3 minus 2x plus a. So finally, it will be 8 over 3 minus 2x plus a. Now, after that, the condition is gf minus 1 equals to 3. अगर minus 1 रख देंगे gf के function में, तो result क्या आएगा? The result is 3. Replace x with minus 1. So it will be 8 over 3 minus 2 minus 1 plus a equals to 3. 8 over 3 and plus 2, 5. So a equals to 3 minus 8 over 5. 5 3s are 15. 15 minus 8 is 7. 7 over 5 is the value of a. Are you clear? Any confusion? No. Now, after that, in the third part, they are saying f inverse equals to g inverse. So we have f inverse, but we don't have g inverse. So first calculate g inverse. So y equals to the function g, 4x plus a. For inverse, can I say that x equals to y minus a upon 4? X subject, जैसे x subject बना, it is the function of g inverse with x minus a over 4. And now, f inverse equal to g inverse means 3 over 2 minus 1 over x equals to x minus a over 4. By taking LCM towards left, 2x, it will be 3x minus 2 equals to x minus a over 4. Any confusion? Hopefully no. Now, cross multiplication, 4 3s are 12x minus 4 2s are 8 equals to 2x squared minus 2ax. Now, 2x squared minus 2ax minus 12x plus 8 equals to 0. The condition is has two equal roots.
Equal roots means discriminant is equal to 0. Equal roots, discriminant is equal to 0. So now, if we use discriminant is equal to 0, b squared minus 4ac equals to 0. What is the value of b? बताइए. What is the value of b? What is the value of b? Minus 2an, minus 2an, minus 12. So I'm writing it 2a plus 12. As I told you earlier, अगर दोनों के साथ माइनस हो तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, right? Minus 4, what is a? A is 2. What is c? C is 8. Equals to 0. 2a plus 12 whole square equals to 64. 2a plus 12, by taking under root, it will be plus 8. And 2a plus 12 equals to minus 8. What is the value of a? 8 minus 12. Minus 4 divided by 2. Minus 2. Minus 8 minus 12 minus 20 divided by 2. Minus 10. These are the two values of a. Now, question number 3. It is of May, June 17, paper 1-3. The first part. Express 9x squared minus 6x plus 6 in a form. And the form is ax plus b whole squared plus c. Expand the bracket. A squared plus 2ab plus b squared plus c. Isn't it? Now, after that, compare. A squared equals to 9. So what is the value of a? The value of a is 3. And the coefficient of x 2ab equals to minus 6. So the value of b is minus 6 divided by 2. A is 3. It is minus 1. And the constant b squared plus c equals to 6. So c equals to 6 minus b squared. Minus 1 is squared. So 6 minus 1 is 5. Are you clear? Any confusion? बच्चों, जब भी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का क्वेश्चन आए, आप लोगों ने कर्व को स्केच करना है. मार्क्स नहीं है कर्व स्केचिंग के, बट यू गाइस हैव टू स्केच. अगर कर्व स्केच कर लेंगे तो आगे के पार्ट्स में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, राइट? सो आई एम मेकिंग द कर्व एग्जैक्टली as the form given in the question. So the function or y is equal to ax 3x plus minus 1 because b is minus 1 whole squared plus c. Now we have to compare it with our general equation y equals plus 5, right? We have to compare it with our general equation, and the general equation which we have, the general equation is y equals to a x minus h whole squared plus k. हमें इससे कंपेयर करवाना होगा फॉर स्केचिंग. सो गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम कंपेयर करवाते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? कोई बता सकता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? आवाज आए सबकी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 3 1. कोई 1 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है. यस, 1. कोई 1 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, जबकि ना 1 है ना 3 है. जबकि ना 1 है ना 3 है. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज in our general curve the coefficient of x is 1, but here the coefficient of x is 3. हाँ, उसके बाद करेंगे. अब आप देखिए, अगर इसमें से कॉमन लिया जाए, y equals to 3 common, so it will be x minus 1 over 3 whole squared plus 5. So what is the value of a? What is the value of a? What is the value of a? 3? 3? No, it's not 3. क्या हुआ है? यहां पर 3 जब कॉमन लिया जाएगा, स्क्वायर्ड से कॉमन आ रहा है, तो वो 9 बनेगा. It's not 3.
इट्स नॉट 3, होल स्क्वायर था ना ब्रैकेट का, जब कॉमन लिया गया 3 को तो स्क्वायर ही कॉमन आएगा, सो 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9। नाउ अब हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज 9, द वैल्यू ऑफ एच इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 1 upon, what is the value of h, 1 upon 3 minus minus plus, right? And what is the value of k, 5. So I'm making the curve, the value of h is 1 upon 3, the value of k is 5. Here is the turning point, so the curve is like intersecting y-axis from 6, the constant of equation. This is c y-intercept. Are you clear up to this? Are you clear up to this? Okay, after that, the first part is over, right? The first part is over. In the second part, state the smallest value of p for which the function is 1, 1. For which the function is 1, 1. We have to calculate the value of p. We have to calculate the value of p. p की जगह पर कोई वैल्यू आएगी. फंक्शन बच्चों 1, 1 टर्निंग पॉइंट तक होता है और टर्निंग पॉइंट के बाद फंक्शन 1, 1 होता है. ये जो कर्व हमने स्केच किया, इसका टर्निंग पॉइंट क्या आया था, एक्स एक्सिस 1/3. तो पता ये चला द वैल्यू ऑफ p इज 1/3, कि 1/3 से पहले फंक्शन 1, 1 है और 1/3 के बाद फंक्शन 1, 1 है, और इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, राइट? अप टू 1/3 and after 1/3 the function is 1, 1, because in 1, 1 function there is no turning point. Turning point function में जिस function में नहीं होगा, that function is called 1, 1 function. Are you clear? Now after that, for this value of p obtain an expression of f inverse. Function का inverse calculate करना है. How to calculate the inverse of function? Equate करवाइए y से function को, 9x squared minus 6x plus 6 and make x be the subject. अब एक चीज सुनिएगा बच्चों, ये मैथ्स का रूल है. दिस इज द रूल ऑफ मैथ्स. if there are two powers of variable in any function, if there are two different powers of variable in any function, तो उसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता. यहां पर बच्चों x की दो पावर्स हैं, एक x स्क्वायर है, एक x की पावर 1. so we are unable to make x be the subject. तो अब जनाब क्या करें, सिंगल पावर में लेकर आइए इसे. सिंगल पावर में कैसे लेकर आएंगे, 3x - 1 होल स्क्वायर प्लस 5. कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर फॉर्म से इनवर्स बनना पॉसिबल है. प्लस हियर इज okay. Now after that, now we have to make x be the subject. So 3x - 1 whole square equals to y - 5, and 3x - 1 equals to under root y - 5, and x equals to under root y - 5 plus 1 divided by 3. बन गया x सब्जेक्ट. हम कह सकते हैं f इनवर्स ऑफ x is equals to under root x - 5 plus 1 divided by 3. This is the inverse of the function. And after that, state the domain of f inverse. We are unable to calculate the domain of f inverse by the given equation, by the given function. तो इसका एक रूल है. रूल क्या है, जो फंक्शन हमने स्केच किया है उसकी रेंज कैलकुलेट कर लीजिए. फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर लीजिए.
So, what is the range of the function according to diagram? Range of function is, और रेंज का मतलब क्या होता है अभी बताया, वाई एक्सिस में फंक्शन कहां नजर आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। क्या 5 और 5 से ऊपर फंक्शन नजर आ रहा है वाई एक्सिस में? तो पता ये चला रेंज ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, देयरफॉर डोमेन ऑफ इनवर्स is also equals to is also greater than equals to 5। जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा वही डोमेन ऑफ इनवर्स हो जाएगा, और जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो रेंज ऑफ इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स चलते हैं दोनों, वाइस वर्सा चलते हैं दोनों, राइट? नाउ आफ्टर दैट इन पार्ट 4 state the set value of q for which the equation this has no solution, and no solution means discriminant is less than 0. We have to use discriminant less than 0 to calculate the value of q. मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करने में 3 से 4 स्टेप्स लगेंगे, राइट? लेकिन जब देखा गया मार्क्स इस क्वेश्चन के कितने हैं, 1, तो सिर्फ आंसर मार्क आपको मिलेगा, राइट? जस्ट डायरेक्टली यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ q। अब सुनिए कैसे, क्या कह रहे हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन द फंक्शन एंड द लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा। फंक्शन और लाइन का इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर हम दो ग्राफ बनाएं, पहला ग्राफ बनाएं y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा ग्राफ बनाएं y इक्वल टू क्यू, तो ये इन दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन नहीं होगा, राइट? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो बना हुआ है, ये बना हुआ रेड में, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो बना हुआ है। y इक्वल टू क्यू का ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि द वैल्यू ऑफ q इज 4, द वैल्यू ऑफ q इज 4, तो y इक्वल टू 4 कहां बनेगा बच्चों? हियर, यही बनेगा ना, y इक्वल टू 4। सॉरी, मैं इसको चेंज कर रहा हूं और इसको मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू 5.5। y इक्वल टू 5.5 कहां बनेगा? यहां बनेगा 5.5, राइट? पता ये चला अगर 5.5 q की वैल्यू हो गई तो इंटरसेक्शन हो रहा है, टकरा रहा है कर्व लाइन से, ऐसा ही है। तो जनाब अगर मैं लिख दूं इसको 5, अगर मैं इसको लिख दूं क्या 5, तो इट मींस ये 5 से टकरा रहा है, ऐसा ही है। एक जगह से टच तो कर रहा है ना, नो सॉल्यूशन तो नहीं है, एक जगह से टच कर गया। फिर अगर मैं लिखूं, फिर अगर मैं कहूं इसको y इज लेस देन 5, लेस देन 5 क्या मतलब? 5 से नीचे रहिए, 5 से नीचे कहीं पर भी हम चले जाएं, क्या लाइन का और कर्व का इंटरसेक्शन आएगा? नो। तो पता ये चला नो सॉल्यूशन उस वक्त होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ q इज लेस देन 5। सो दिस इज द रिजल्ट। अगर 5 से कम कोई भी लाइन बना दें हम, तो उसका इंटरसेक्शन नहीं हो सकता कर्व के साथ। आर यू क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 from the file of function. Now, this is question number 4 from the past paper file. It is February-March 17, paper 1-2. Now, in the first part, yes, boys, here. In the first part, show that gfx is this and obtain an unsimplified expression for fgx. The first is function f को g में रखना है, f को g में रखना है, so we'll get gfx। जब फंक्शन f को g में रखना है तो g फंक्शन क्या है? 3x, यहां पर f आ जाएगा +2, so it will be 3, 2x स्क्वायर +3
plus 2. And here it is 6x squared plus 3 3s are 9, 10, 11. This we have to prove, right? This we have to show. And now unsimplified form of fgx. G को f में रखिए. fgx. G को f में रखिए. So it will be 2g squared plus 3. And now 2, what is g? 3x plus 2 whole square plus 3 unsimplified form. इसी form में रहने देना है. Right? So this is part 1. This is part 1. And after that, in the second part, find an expression of fg inverse. We have to calculate fg inverse. So y equals to 2, 3x plus 2 whole square plus 3. Now, it will be 2, 3x plus 2 whole square equals to y minus 3. So 3x plus 2 equals to y minus 3 divided by 2 under root, and 3x equals to under root y minus 3 over 2 minus 2, and x equals to 1 over 3 times the first term y minus 3 over 2, and the second term is 2 over 3. Now we can say that it is fg inverse 1 upon 3 times under root x minus 3 over 2 minus 2 over 3. Are you clear up to this? Yes or no? बेटा 3 जब नीचे आएगा तो 1/3. इसके होल के नीचे मैं 3 लिखूंगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, तो साइड में मैंने 1/3 लिख दिया. राइट नाउ अब देखिएगा जरा, स्टॉप वर्किंग. Determine the domain of inverse. We are unable to calculate domain of inverse directly. We are unable to calculate domain of inverse directly. So we have to calculate the range of function. We have to calculate the range of function. And what is the function we have? The fg function is, here it is 2, 3x plus 2 whole squared plus 3. रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? स्केच करना पड़ता है. एच के की फॉर्म में लेकर आना होगा. तो जनाब अभी हम एच के की फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है. नाउ अब 3 कॉमन लें जरा ब्रैकेट में से, तो कॉमन क्या आएगा? 9 आएगा कॉमन बिकॉज ऑफ द स्क्वायर. सो 9 2 18. हियर इट इज एक्स प्लस 2 over 3 whole square plus 3. Now I'm sketching the curve. How to sketch? सुनिएगा. What is the value of h? The value of h is minus 2 over 3. The value of k is 3. And from where we have to intersect? कहां से intersection होगा जनाब? Intersection होगा हमारे पास, अभी देखो हमारे पास एफ जी एक्स की कोई जनरल इक्वेशन मौजूद नहीं है, तो इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. इंटरसेक्शन वाई के साथ है, तो एक्स को रख दीजिए 0. एक्स को रख दीजिए 0. इफ वी सब्स्टिट्यूट एक्स 0 इन दिस इक्वेशन, सो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3, 4 2 8, 9 10 11. इंटरसेक्शन कहां से हो रहा है बच्चों? 11 से हो रहा है. कहां से हो रहा है? 11 से हो रहा है इंटरसेक्शन. सो this one, and intersection is at 11. Intersection is at 11. अब सुनिएगा. कर्व सही बना है हमारा? ठीक हो गया. कर्व हमारा बिल्कुल सही बना. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई. प्रॉब्लम क्या है? यहां पर इन्होंने क्या कहा था? कर्व आपने बनाना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से. कर्व आपने बनाना है कहां से? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से. तो बच्चों ये जो पीछे की तरफ कर्व बनता हुआ आया है, ये जो कर्व बनता हुआ आया है, ये तो एक्स्ट्रा कर्व बन गया. राइट? हमें कहां से कर्व बनाना स्टार्ट करना है? बिल्कुल यहां से. बिल्कुल यहां से. कहां से कर्व बनाना स्टार्ट करना है? x इक्वल टू 0. बिल्कुल यहां से ये कर्व बना. दिस इज द कर्व. दिस इज द कर्व. राइट?
अब बताइए मुझे कर्व आपको y एक्सिस में कहां नजर आ रहा है? कर्व y एक्सिस में कहां नजर आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। देयरफॉर मैं कह सकता हूं यहां पर रेंज ऑफ फंक्शन is greater than equals to 11. Therefore, domain of inverse is also greater than equals to 11. Are you clear? तो जनाब स्केचिंग करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, स्केचिंग नहीं करेंगे परेशान रहेंगे। राइट, आगे देखिए बेटा, कहां नजर आ रहा है कर्व? आपको 3 पे नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कहां नजर आ रहा है? 11। सही। नाउ आफ्टर दैट इन द थर्ड पार्ट, व्हाट वी हैव इन द थर्ड पार्ट, जीएफ के फंक्शन में 2x रखिए, जीएफ के फंक्शन में 2x रखिए और एफ जी के फंक्शन में x इक्वेट कर दें और सॉल्व कर लें। जीएफ का फंक्शन ऊपर नजर आ रहा है हमें, इसमें 2x रख दीजिए, 6 2x होल स्क्वायर प्लस 11। एफ जी का फंक्शन ये नजर आ रहा है हमें, ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। Now we have to solve the equation. So it will be whole square expansion, 4 6 4 are 24x squared plus 11 equals to 2 in the bracket a squared plus 2ab plus b squared plus 3. So 24x squared plus 11 equals to 18x squared plus 24x plus 8 plus 3. Now 24 minus 18, 6x squared minus 24x, 11 minus 8, 9, 10, 11. It is 0, 6x common. So it will be x minus 4 equal to 0. What are the two values of x? 0 and 4. These are the two values of x. Are you clear?